But within the next 24 hours, the owner of Sri Annapurna Sweets is summoned. A video is surreptitiously recorded. There are some very, very emphatic observations that we... देशनीति केवल सच्ची और पक्की खबरें. What you're seeing here are two videos. The first video is of Mr. Srinivasan. He is the owner of Sri Annapurna Sweets of Coimbatore. There was a meeting organized by the BJP. As far as its membership drive is concerned, people from all walks of life, including businesses in Coimbatore, were invited to meet Finance Minister Nirmala Sitharaman. In the first video, and for the benefit of those who do not understand the beautiful Tamil language, like I don't do, I will just simply tell you what he says. He says, I have a sweet shop. The GST rates are so different for each category that sometimes it makes the person calculating the input credit an income tax official difficult to calculate. The computer gets stuck. He then goes on to say, sweet attracts a GST of 5%. On savories, the GST is 12%. For a plain bun, there is no GST. But a bun with cream, the GST is 18%. And the computer gets stuck sometimes. There is laughter in that room. There is humor. The finance minister doesn't seem to mind at all herself. She also indulges in that humor. But within the next 24 hours, the owner of Sri Annapurna Sweets is summoned in the presence of the finance minister and is made to profusely apologize. And he is not just made to apologize, a video is surreptitiously recorded, perhaps without even his consideration or consent. And that video is shared by the official handle of the Bharatiya Janata Party's Tamil Nadu unit. There are a few questions that we have, but before those questions, there are some very, very emphatic observations that we want to voice before you. This is a grave cause of concern. If citizens of this country, if businesses of this country, if people of this country are not going to be able to voice their concerns before public servants, how is governance and policy making going to happen? The price for asking a question, the price for making a suggestion, the price for appealing for a simple GST regime is humiliation, is intimidation, is essentially making you apologize, recording videos surreptitiously, and then putting it out in public domain by the ruling party. That's how drunk on power, that's how intoxicated on power the BJP is. We've all known of the Prime Minister's fragile ego, but Ms. Nirmala Sitharaman perhaps beats him heads down. The fact that she's the finance minister of this country, the fact that she was meeting businesses from Coimbatore, the fact that businesses from Coimbatore are supposed to voice concerns before her is a given. But instead of resolving their problems, the finance minister chooses to intimidate, chooses to threaten, chooses to shame, chooses to humiliate businesses of this country. Why? Because they are small, medium enterprises. Because they are not the Adanis of the world for whom you roll out the red carpet. I just want to simply put some facts before you. Because this is outright disrespect and complete arrogance of the ruling regime. The reality is that India's small and medium enterprises like Sri Annapurna have dealt with a body blow of demonetization, have dealt with a flawed GST, their cost of taxation has gone up, have dealt with tax terror, have dealt with police, have dealt with raids for no rhyme and reason. And these are the backbones of the Indian economy. The government chooses to intimidate small and medium enterprises, but actually rolls out the red carpet for big businesses. This very government chose to cut the corporate tax to the lows of 22%. They put over 4 lakh crore rupees in the pockets of India's rich billionaires, who did not create a single job, by the way.
They give them tax exemptions and they coax taxes out of you. A 67,000 crore money that 10 sick companies owed to public sector banks are bought by Adani at under 16,000 crore rupees. At over a 74% haircut, Adani buys companies. That's the loss incurred by India's public sector banks, 74%. And look at how small, medium enterprises, small businesses are being humiliated, disrespected, and intimidated. I just want to put two figures before you and then I will make the statement in Hindi. In this country, corporate tax has traditionally been higher. The corporate tax collection has been higher because corporates make far more money than people like you and I do, who pay normal income tax. But guess what? The latest figures from the government of India tell us that income tax collections were 3.46 lakh crore rupees, whereas corporate tax collection was 2.10 lakh crore rupees. Much, much lower than income tax collections. When Manmohan Singh demitted office, corporate tax collection was 35% of all taxes collected. Today it is at 26%. Income tax was at 21% of all taxes collected. This is direct tax. It's now at 28%. The reality is that India's poorest, half of India which is poor, pays 64% of GST. And this is what the government is doing. Coaxing taxes out of you, intimidating, humiliating, disrespecting small businesses, making them bow before them, simply for asking questions that anybody in public life, anybody in public service should answer. I will make the very, very simple statement in Hindi now. ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयम्बटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0, और अगर क्रीम लगाते हो तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को, और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई, तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। ये सत्ता का गंदा नशा, ये सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो ये और क्या है। और ये वो सरकार कर रही है जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो फिर देखिए,
10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे, तो उनके साथ ये किया जाएगा। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा। और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को। और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी, और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। There is a reason why the BJP will never be able to make an inroad in the land of Periyar, because this is nothing but absolute insult, disrespect of Tamil Nadu, of its hard-working people, of hard-working industrialists who build their businesses with sweat, with equity, and with everything that they've had in them. निर्मला सीतारमण को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका घमंड जो है वो इस तरह का। उनसे महंगाई की बात करिए तो वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। वो डेटॉल से लोगों का मुंह साफ करने की बात करती है। ये किस तरह की भाषा और किस तरह के बयान है। और अब जो उनकी हरकत है, नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर उनको वित्त मंत्री बनाया है। इस सरकार का हर मंत्री घमंड और अहंकार में इतना चूर्ण है, और बार बार उसका ब्यौरा आपको देखने को मिलता है। और इसके जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के लोगों के साथ, तमिलनाडु के कारोबारी के साथ जो आपने किया है वो अस्वीकार है। What you have done to an industrialist from Tamil Nadu being drunk and intoxicated on power is absolutely unacceptable. We are not going to accept this. We demand an apology from Ms. Sitaraman. We demand an apology from the BJP. And we also demand the BJP Tamil Nadu unit to come forward and say who recorded that video and why was it uploaded. And is there a price that we have to pay for asking questions of this government, for seeking help, for giving suggestions? That's the moot point. Thank you. अगर आपके इस पर कुछ सवाल हो तो उसका स्वागत है.